India's summer heat is brutal and getting even worse. In 2022 alone, India recorded 203 days of heatwave conditions, 5 times more than the year before. When temperatures hit 122 degrees Fahrenheit, the conditions make it almost impossible for the human body to cool itself. As a result, hundreds of people died. But as India's economy grows, more people can afford to buy a life-saving appliance, an air conditioner. मैंने अपने बच्चे की तरफ ध्यान दिया, इसलिए एसी खरीदा। और नेक्स्ट उसका फ्यूचर ये है कि उसका ठंडी कूलिंग से काफ़ी उसको राहत मिली, उसको कभी कोई परेशानी नहीं हुई, जब से उसको लगाया कभी बीमार भी नहीं हुआ। PU is still in the minority. More than 1 billion people in India don't yet own an AC. The country's per capita GDP will top $9,000 this year for the first time, nearing the threshold where economists say AC sales jump. Using air conditioning improves sleep quality and cognitive performance, making people and countries wealthier. काफ़ी मतलब टेम्परेचर में क्या है कि हमारे और भी 3 कमरे हैं, वो बहुत गर्म है। But the growing reliance on air conditioners could also worsen the climate crisis it's responding to. The cooling industry is growing fastest in countries that still rely heavily on coal-fired power, and where most people can only afford cheaper, less energy-efficient units. मैंने अपना काफ़ी खर्चा बंद कर दिया उसके लिए। हमने जैसे हम रोटी खाते थे तो चावल बंद कर दिया, अगर हम चावल खाते थे तो हमने रोटी बंद कर दिया था। इसलिए हमने और फिर काफ़ी कुछ हमने सेक्रीफाइस की, जैसे हम लोग नॉनवेज खाना चाहते थे तो नॉनवेज खाना बंद कर दिया, हमने वेजेस खाना शुरू कर दिया। और मैंने कहीं घर में काम पकड़ा ताकि उसकी हमने सब कुछ कर पाए। Coolants also pose a problem. One of the most common is hydrofluorocarbons. They're known for being an extremely potent greenhouse gas with a damaging effect on global warming. 170 countries have pledged to ban HFCs, but the alternatives are expensive. So cooling companies are hunting for cost-effective alternatives. For a lot of AC owners like PU, there's no going back. एसी की वजह से हमारे पास बैठने लगे, टाइम देने लगे, हमारे पास कितनी लड़ाई झगड़े थे, सब हमने ख़त्म करके यहाँ पे